All right. By the way, I don't know if you guys know this, but your conversation is entirely transcribed too. So you know what transcription is? So basically, I got a huge file of everything Mhm. written in addition to the recorded video. So that's pretty awesome. All right. So let's kick it off, guys. Assalamu alaikum. Hello, everyone. And today we have Saad Mukhtar. And of course, my name is Asif Chauhan with Mani Ahmed. And, to, Okay. and today, hello, Mani. And today we are going to talk, ask some questions. सवाल पूछेंगे साद से। साद हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत तकरीबन हमें 20-25 साल हो गए हम तीनों को एक दूसरे को जानते हुए। साद इस वक्त लाहौर में, of course, he's going to introduce himself soon. तो yeah, just to give you guys some background, हम लोग तकरीबन 20-25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। Or we met when we were in like late teens, early 20s, and now, well, at least I can share mine. I'm in my, late 40s. So it's been a while. So hello, welcome, Saad. How would you like to introduce yourself? Yeah, Assalamualaikum, Asif. Assalamualaikum, Mani. Uh, First of all, thank you so much for inviting me. And obviously, as usual, it is good to see you guys once again. And with these uh, technologies, where we get to see each other's faces. Baki, ek introduction, like Asif said, we've known each other for what, more than 2 decades. Uh, and we've been in touch ever since, on and off. Uh, and we've had good times. Uh, those days that we were together in LA during our studies and everything. All right. Los पढ़ाई Angeles. पढ़ाई हमने साथ की, yeah, पढ़ाई साथ की, and obviously another good thing that is which I feel is sort of special is that all three of us had similar backgrounds. That is, we were raised in Middle East because our parents used to work there. Then all three of us went from there to US for studies. You guys stayed on. I ended up coming back to Pakistan, and so it has been quite a journey. And so now I'm in Lahore, and you guys are all the way there. आप Right. लोग के यहाँ, you guys, I see this You know, क्या कहते हैं, पीछे पूरी sunlight चल रही है, and यहाँ पे it's almost 3 o'clock in the morning, and it's the sheer love for my brothers like you, जिनकी वजह से so, I'm awake. so just to be clear, you are in Lahore, Pakistan, Yeah, Mani, I'm in Phoenix, Arizona. and I'm in Miami, Florida. Right? yeah, We're literally covering 3 different time zones here. Love it. yep. That's how it. Mani, would you like to say something? Yeah, I am just so happy to see Saad and be a part of this podcast. And Saade, you have rejuvenated all the old good memories. Just to let you know, everyone, me and Saada, we kind of knew each other back from Saudi. I was born and raised in Jeddah, and I think Saad, we met Yep. with some other friends. And it just so, what a small world के हम लोग पढ़ाई के लिए साथ LA आ गए, फिर roommates बन गए, और हमने काफी कुछ साथ गुजारा. Especially we grew up together. I can strongly say we practically grew up together. We started working together. तो काफी जो जिंदगी की जो बहुत ही आला और खूबसूरत चेंजेस होती हैं, जो आप अपने बहुत ही गहरे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और वो टाइम जो कि एक खूबसूरत मेमोरी बन जाती है, वो हम तीनों में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम तीनों ने वो वक्त साथ गुजारा है. तो आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हम अभी भी दोस्त हैं, क्योंकि बहुत से लोग दोस्त नहीं होते. और यकीन मानो कि मुझे तो और दोस्त चाहिए भी नहीं. हमारा जो छोटा सा ग्रुप सर्कल है वो इतना स्ट्रांग है कि हम लोग अभी भी साथ में हैं, और हम लोगों में से किसी ने भी नए दोस्त नहीं बनाए. अक्वेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन नए दोस्त नहीं बनाए, जो बचपन के जो साथी होते हैं. तो आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस गैंग. Well, you know what? Let me just ask that question first. Now, this is a question, right? हमारे जैसे हम जो age group में सादे, let's start with you, and then of course, Mani, you can answer too. हमारी एज में आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि नए दोस्त बनाना मुश्किल है, which is kind of, और ये culture wise भी ये सिर्फ देश में नहीं है, America, same thing, they say the same thing. Have you guys made what do you guys think about that, how true that is, and have you guys made any friends since you guys were in college after that? When I say friends, I mean people that you still talk to today, long-term friends, whatever.
या अच्छा, मेरा ना इस पे देख, आई एम ऑफ द ओपिनियन, एटलीस्ट एज आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, यू नो, उसके पीछे आई गेस थोड़ी सी अपब्रिंगिंग का भी है कि आप you live in Middle East, you're now with family, you are open to different cultures, different ethnicities and everything. So I've always found it much easier to be friends. But then again, उसके साथ साथ एक ये है कि once ये जो आपकी life होती है ना, when you're young, and especially when I say young, it means जब आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता और अगले के पास भी देने के लिए कुछ नहीं होता, वो जमाने की जो दोस्ती है ना बचपन की, कि यार ना मेरी जेब में 1 रुपया है, ना तुम्हारी जेब में चौनी है, लेकिन बस तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और बस वो एक उसका एक बॉन्ड फर्क है, वो वाला बॉन्ड तो नहीं होता। बेगर्जी जिसे कहा बट जाता था, या बेगर्जी। एग्जैक्टली हाँ मतलब हाँ ठीक है। वक्त के साथ साथ होता ये है कि तो आई थिंक आई हैव फाउंड के यू नो जो स्टूडेंट लाइफ की फ्रेंडशिप्स होती है हम्म दोज आर दोज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन एनीवन्स लाइफ। हम्म But then again, I would not say that you cannot make friends. You can. In practical life, you do meet maybe out of 100 people, yeah, maybe 1 or 2 people that you एक होता है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें तो आपका रोजाना का मिलना मिलाना है, मीटिंग्स हैं, XYZ, but राइट once let's say you work with 2 people और एक जगह काम कर रहे हैं, they both go to different companies, and then again 5 years down the line, 10 years down the line, if they're still in touch, that means that they have become friends. तो वो उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। बट बैक इन द डेज, जो स्टडी स्टूडेंट लाइफ या यंगर एज में, इट इज मच इजियर टू मेक फ्रेंड्स। Mani, what do you think, dude? yeah, some great points, Saad Saab. For me, yaar, it has I'm gonna go a bit emotional here. तो मेरे साथ जो हमने एक्सपीरियंसेस बहुत सारे किए हैं जिंदगी के साथ, और फिर जिंदगी के थपेड़े भी साथ ही खाए। और वो जो साथ ने बात की कि ना मेरी जेब में पैसा है ना तेरी जेब में, लेकिन हम दोनों के साथ एक दूसरे का साथ है, तो सर जी वही जिंदाबाद। तो Right. या तो खाएंगे तो दोनों साथ खाएंगे, या फिर दोनों भूखे रहेंगे, राइट। Right. और सो जो देखो खुशहाली में तो बहुत साथ होते हैं, ये तो हमने भी देखा है कि जब हम खुश थे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब हम अकेले थे, जब हम गम में थे, जब हम किसी ट्रबल्स का सामना कर रहे थे, तो बहुत कम लोग साथ में थे। तो उसी वक्त जो है आपको पता चल जाता है कि हु आर माय दोस्त कौन है और फिर एक सच्चा दोस्त कौन है। Mm-hmm. तो मैंने तो भाई हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दोस्तों का जो है एक सर्कल, ग्रुप फ्रेंड्स, वो बहुत मायने रखता है। और फिर सादे जुबा के एक स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, उनकी दोस्ती यारी अलग होती है, लेकिन मेरे लिए जो लव्स है दोस्ती यारी, उसमें बहुत फर्क है। दोस्त दोस्त होता है जो कभी भी अवेलेबल हो, लेकिन एक यारी जो है वो मैं अब कह सकता हूँ कि अब हम लोगों की यारी है जो बचपन के साथ है, और हम दोनों के एक दूसरे के सामने बड़े हुए हैं, खुशियां देखी हैं, गम देखे हैं, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे का सहारा बने। तो नॉट टू डीप, लेकिन वो यारी जो है वो अभी तक स्ट्रांग है। और फिर जब आपके इतने पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, और आपने अभी तक दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपने जो राब्ता कायम किया हुआ है, जब आपके ऐसे दोस्त हैं तो फिर नए दोस्तों का उसमें कोई चांस ही नहीं बनता सर। Fair enough. Yeah. Okay. Well, let me ask myself that question then. I would say कि I think it is possible. मेरे ख्याल में ये मुमकिन है, लेकिन I do think you have to approach that in a certain way. I don't think it happens. मेरे ख्याल, क्योंकि ये मैंने देखा है मेरे साथ, it has happened कि कुछ जो दोस्त हैं उनको मैं जानता पहले से था, but I didn't really, was not very close with them. अब आके जैसे अपने साकिब वगैरह मैं उनकी जानता हूँ, जानता था मैं पहले, लेकिन I was not really मैं उनके साथ हैंग आउट थोड़ी करता था। लेकिन दिस काइंड ऑफ फनी, क्योंकि जब कॉलेज वगैरह के दिन खत्म हो गए, अपना जब शुरू हुआ ये अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई, उसके बाद भी काइंड ऑफ स्टार्टेड दिस व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, और उसके बाद से भी खाना got at it, and then ये उसके बाद फिर उसका भाई भी, फिर दूसरे दोस्त भी, and then I felt कि मेरा at least as far as I was concerned, मेरे जो दोस्त थे जो अब मैं इनसे, I consider them very close friends now, right? Yeah. तुम लोग, you guys consider them, but मेरे लिए it's a bit of an expansion. So correct. It was kind of nice at this age. I think it's possible. I do think, लेकिन ये जरूर है कि यार वो जो खुदगर्जी वाली जो चीज है ना, वो you have to see if it's there or not. Right. जैसे दूसरा मेरा जो है वकार, तुम दोनों को जानते हो, right? Now that guy I met when I was beyond college था, लेकिन then after LA, और उससे मेरी आज भी बात चलती है 2-3 घंटे. We are like, we just talk. Right.
It's insane, like, right? वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि it had that kind of, you know, we didn't, जैसे साथ की बात थी और तेरी भी और मेरी, at the end of the day I guess it's true for everything, कि बेगर्जी जो होती है ना, that is important. उसके बाद honesty वगैरह सब चीज आ जाती है automatically, right? Otherwise, you know, nothing works. हाँ, लेकिन उसी के साथ साथ देखो ना, अब जैसे you let's say सादे ने कहा था कि oh yeah we work together and everything, so then you have, you know, your work friends and the outside circle, फिर मेरे दोस्त का दोस्त है, तो हाँ मैं उनसे दोस्ती रखूंगा, उनसे बातचीत ऑफ कोर्स होगी, इट्स pretty standard, pretty common. लेकिन एक जो चीज होती है ना यार, खुले डुले रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, right. किसी को तू बुलाना और अबे ये वो आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक रिश्ता बनाना पड़ता है, यू हैव टू अर्न दैट, वो आप फिर कमाते हैं जिसे कहते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गहराइयों में जा रही हैं, खैर हम वहां जा नहीं रहे, लेकिन ये सब चीजें जो है वो हमें अलग कर देती है. You know, we can, I mean, yeah, we can definitely get into details and stuff. Now ladies के लिए बहुत आसान है, you know that, right? They can make 100 friends within seconds. Yeah, I don't know about that. I don't know if they're ऊपर की दोस्ती है कि गहरी दोस्ती है, I don't know. I'd rather have few very close friends than random of 100 people who I cannot count on. लेकिन खैर. Well, some females would disagree with that, but I think I know many females, काफी ख़वातीन I know, who would agree with it, who would agree with you. No, we would love to hear their comments. अगर हम कुछ गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो do let us know. साद को पता होना चाहिए, साद तो married है. Oh, by the way, साद, mashallah, are you married, by the way? I don't know. Are you? Yeah, I am. I've been married for, mashallah, almost, it's going to be 16 years in January. क्या बात है सर? कितने बच्चे? Mashallah, 3. I've got 3 kids. ये चीज. What are their ages? One boy and 2 girls. My son is 14 and a half. He's mashallah in O levels now, 9th. My daughter is at GCSE part 1, and the youngest one, by the way, the middle one is about 12, and the youngest one is almost 7. Yeah. Wow. Ajay Sabit, out of the 3 kids, who relates to you the most? Now I'm not talking about their relationship with you. Who you say is like, oh, ye to pura mujh pe gaya. Like, you mean physical appearance or? No. I mean हरकतों में. हरकतों में, characteristics में वगैरह. या देखो, मैंने ना किसी जगह एक सुना था कि बात, हालांकि मेरा ख्याल है कि इमोशनल नहीं, I'm just saying this on a light note. Of course. कि हालांकि बात बड़ी इमोशनल है, लेकिन उसके लिए म्यूजिशियन एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चाहिए होगा. अरे do share शहनाई बज रही है. तो उसमें ये था, वो किसी ने कहा था कि जी, मैं किसी जगह पढ़ा था कि जी वालिदैन जो होते हैं ना, वो आपके जाते नहीं, इवन तो यू लूज देम, आपके वो फौत हो जाते हैं, बट वो किसी ना मतलब ना सिर्फ आपके वालिदैन बल्कि आपके दादा नाना सारे के सारे, बिल्कुल, वो अपने आने वाली नस्लों में किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी रूप में आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं. वो सिर्फ होता ही है कि मिसाल के तौर पे मे भी हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे बात करने का अंदाज अपने परदादा के छोटे भाई से मिलता हो. देयर इज अ चांस कि आसिफ की हाइट जो है या आसिफ की बिल्ड जो है वो अपनी वालदा के मामू के पे गई हो. यू नेवर नो. ठीक है, बिल्कुल. तो बच्चों का सर ये है कि तीनों के तीनों जो है ना, उनकी मुझे कुछ ना कुछ आते हैं लगती हैं. मतलब मुझे लगता है कि बेटे का जो बास चीजों पर गुस्सा है, मतलब उसका जो मुझे एंग्री यंग मैन जो उसका है, जो कि एक जमाने में मेरे अंदर होता था, वो मुझे लगता है कि कभी कभार उसकी जो वो जिद होना उसका मेरे पे, बड़ी बेटी का एक खास किस्म का ना एक डार्क ह्यूमर है. शी हैज दिस डार्क ह्यूमर जो मुझे फील लगता है कि ये भी हल्का सा ना कि मेरे अंदर भी वो जरा सी गुस्सा आता है. और छोटी वाली जो है शी इज वेरी एनर्जेटिक. अरे ह्यूमर का डार्कनेस तो है. या तो वो जो है क्या कहते हैं, छोटी है, उसकी हरकतें जो है, छलांगे इधर से उधर, वो जो एनर्जी है, वो मुझे लगता है कि जब मैं छोटा होता था तो I was pretty much the same. Yeah, that's how it is. That's awesome. I love his kids. मुझे अभी भी याद है, I gotta share this. जब मैं लाहौर में मिला था, अब तो बड़ी हो गई है सारे बच्चे. I don't know how many years ago I was there. तो मुझे वो बड़ी बेटी कहती है
कहती है कि आप शादी क्यों नहीं करते अंकल? तो मैंने कहा नहीं, क्या कि शादी की है? सही, हाँ मैंने कहा, शादी की है? मैंने कहा नहीं। तो कहती फिर आप काम पे क्यों जाते हैं? Can you see, yeah. can you see the, can you see the, can you I, connect the I, dots? That is yeah, I remember. future level thinking, bro. सर मैंने उसका कहा ये साथ देखो में ऐसी तरबियत कर रखी है, बच्चे समझते हैं कि बाप जो है ना जाता इसलिए जॉब पर है, हमारे लिए सिर्फ। मैंने कहा क्या बात तो साथ ठीक है। अच्छी बड़ी साथ है, क्या माशाल्लाह, that's good, that's good, That's very good. साथ। और सर आप यकीन करें जो बच्चे जो होते हैं ना, खैर से मेरा ख्याल है कि आप 25 साल के हो and then you become 29, you become 31, you become 35, you're not going to feel that much of a difference. आप लगेगा आप ऐसे ही हैं because obviously अल्लाह सेहत रखे तो it takes a very long time before someone starts looking different, और वो भी overnight तो होता नहीं. Right. But kids is one thing that when you see them growing up, that is something that makes you realize कि यार उस्ताद वक्त जो है Wow. वो मूव कर रहा है. यार So, सादे yeah. साहब आपने बहुत गहरी बात छेड़ दी है. अब I have a comment to make. So as you guys know, I'm not married yet, no kids. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन साथ में हैं, अम्मी अब्बू दोनों. तो at this age, I have seen them grow old, right? And watching them grow older, it's such a different concept dynamic because जिस age में जो एक वक्त होता है ना जो आप अपने वालिदैन को याद रखते हैं अपनी जवानी में बढ़ते वक्त वगैरह वगैरह, अब वो आपके सामने बूढ़े हो रहे हैं. So basically you're watching them grow old, kind of like when they watched you grow older. Yeah. That is a completely mind flip. Like आपका दिमाग खराब हो जाएगा ये देख के. दिमाग खराब तो नहीं होगा, लेकिन you start acknowledging so many of what you see in yourself in them. And there will come a time कि आप कहोगे यार अगर मैं इस, obviously मैं तो इन दोनों की product हूँ, तो आप बहुत सी चीजें acknowledge करेंगे कि अगर मैं जिस तरह मैं एज कर रहा हूँ, एक वक्त मेरा आएगा कि मैं भी ये आदतें अपनाऊंगा. Most likely, I'm not saying 100%, but there's a part of it. Yeah. So you start fixing it. You start saying, okay, I don't want to end up like this. And I'm not saying there's anything bad, but health-wise, for example, right now it's a big issue in my home. अम्मी अब्बू दोनों सारी बातें late 70s के हैं, अब्बू माशाल्लाह early 80s के हैं, उनकी जो health problems हो रही हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि भैया ये genes मेरे अंदर भी हैं, मुझे भी arthritis होगा, मुझे भी ये होगा वगैरह वगैरह जो भी है. तो if I don't start taking care of it now, I can see my future ahead of me right now in my living beds. So not just आपकी आदतें, आपका इखलाक, आपका character, the way you think, but also physically speaking, you start realizing that very soon, okay, you know what? If मैं अगर अभी नहीं सुधरा, तो most likely I'm going to have to go through a lot of the similarities. Just something that came to mind when you talked about that. So speaking of, let's ask Saad Saab a question. And now the fact that he's a guest, we know कि साद साहब लाहौर में हैं. और कितने साल हो गए साद लाहौर में? अच्छा, you said कि भाई तुम पहले US में थे पढ़ाई के लिए and then you went back, right? तो कितने साल हो गए लाहौर में? Yeah, I moved back in 2003, 2004. So it is gonna be almost 20 years. 20 साल हो गए. अच्छा, तो what is, अगर पूछा जाए, what is life like in Lahore? That life Also, if you can, by the way, Sade, we can edit this later. Don't worry about it. But अपना intro भी ये भी बता, like, can you share कि भाई, what do you do for work, वगैरह, and of course, what is life like in Lahore? ठीक है. अच्छा देखें यार, when it comes to life in Lahore, तो उसके लिए मेरा जो outlook होगी ना, that is going to be slightly different. Sorry, I'm sorry, guys. Okay, you know what, Mani, 15 minutes ज़्यादा हो गए. I was just going to remind you that. Okay. Let me stop and Sade will start again. Okay.